नमस्कार। संगीत और नृत्य आमर बहु पुरातन परंपरा। पुराण रे यह वर्णित होइछि, इतिहास रे मध्य यह उल्लेख रही। जुग जुग धरी यही संगीत यही नृत्य लोकमानकर मनोरंजन माध्यम बनी। हाँ, आज भी से संगीत आउ से नृत्य को नहीं लोक माने आनंद लभुचंती आउ खुशी मध्य मनुचंती। हेले कहिया गले जो शिल्पीटीए नृत्य परिवेषण करुच्ची, जो शिल्पीटीए संगीत गान करुच्ची, प्रकृत में से खुशी पाउची तो प्रकृत में से आनंद लभुची तो से संपर्क में आज आम कथा एथपाई आम सहित जोड़ी होती कुचिपुड़ी नृत्यशिल्पी अंबिका दास। मैडम नमस्कार। मैडम आपणकर विभिन्न कार्यक्रम आम देखीचु, विभिन्न स्टेज शो रे आम देखीचु, अति सुंदर कुचिपुड़ी नृत्य आपण परिवेषण करती आ सहित आपणकर फोक डांस मध्य करती। तो ये सब आयत्त केमती कले, माने केबे एगुडा सब शिखिले, विवाह पूर्व ना विवाह परे? Actually, I started my dance journey when I was 5 years old. Originally, I am from Andhra Pradesh, where I started dancing at the age of 5. My mother started to teach me dance on basis of folk dance, western, and any other Telugu songs. Later, my mother got observed keen interest of my Kuchipudi dance skills, so she immediately joined me to my first guru, Kamesh Garu. Later on to Shivanand Garu, later on Dr. Chintarao Balakrishna Garu. From my gurus, I started learning and developed my skills in Kuchipudi. In the parallel to Kuchipudi dance, I started developed my own skills in hula hoop, which is a sports activity. So I developed dance skills with along the hoop. So it's in a fusion version. आपन जो कहले 5 वर्ष बयस द एज ऑफ 5 आपन डांस आरंभ कले, माँ आपन को गाइड कले, माँ भी कौन जने डांसर की? No sir, actually what happened is my grandfather, which is he's very he's very strict, never allowed my mom to dance or not even allowed to watch any dance performances, where she is very actually you see me today in such a dance position. This is not me, actually what she want to be. Yes. So माने आपणक माध्यम रे से तांकर जो मनस्कामना थिला, जो चाहुथिले करिवा पई करि पारि नथिले बापांकर आकोट जोगु, ताहा आपणक माध्यम रे से प्रतिफलित कले, रिफ्लेक्शन हला। माने जस्ट आपण कहि परिबो जे मांकर तरफरु आपण डांस करूचंती। Exactly. So actually, I am just a display. She is the main motherboard. So later on, she after my birth, she used to like at the age of 3-4, she used to ask me to practice or to various competitions, not only dance competition. She used to encourage me for songs competition, essay competition, whatever, dance, fancy dress, whatever the sport. In all activities. अच्छा, आपणकर ग्रैंडफादर केबे किछि आकट करनांती कि झियो को करूथिले, नातुणी के नाइ तू करिया दरकार नै, सेमि किछि कहि नांती? No, when I grown up, he's almost he's not good. He passed away around when I was like 3 around. Oh, okay. So since even though my father used to support me a lot, even my siblings, like everyone just pushed me up to see the world. So where they asked me to practice and everything. Later on, after marriage, I saw the same support from my husband. बहुत बढ़िया रखा। तो मैं कहा जाए विभिन्न समय जे गाड़ी जेते बळे आगु को बढ़ी थाए, गाड़ी रे जदी ठीक ठाक इंधन थिबो ताहले गाड़ी आगु को माडी जिवो। तो जने झियोटी जेतेबळे विवाह करे, जेतेबळे विवाह करिबा परे सेई इंधनर दायित्व नहीं थांती तांकर स्वामी, आउ सेई इंधन माध्यम रे सेई महिला जनक तार निजर
प्रतिभा रूपक गाड़ी को आगू नहीं पारि तो से संपर्क में मध्य कथा स्वामी सहित कथा राजीव दासरी सी आम सहित जोड़ी होती। आज्ञा नमस्कार। जमती कि कहले आपणकर धर्मपत्नी कहले जे विवाह पूर्व अनेक नाच से आयत्त कर सारी लगुला जे विवाह पर हुए तो बॉडी लैंग्वेज रू जहाँ मुझे ठौरैली जे हुए तो विवाह पर से गोटे पूर्णछेद पड़ज बाट टे बंद हो किंतु से कहते मोर स्वामी मोर फादर इन लॉ समस्ते सपोर्ट कर। हाँ सर आम जब देखलु कि तार एत बढ़िया टैलेंट अच्छी तो सीटा को आम सरप्राइज करने चाहलुनु आम आउ टे आगू बढ़िया सहयोग कलु इवेन तो मुझे चाहूँगी आहरी आगू से बढ़ू। अच्छा आपनकर फादर मदर तांकर कौन नहीं कार किसी ऑब्जेक्शन नहीं आम घरे ताको भी सपोर्ट करे एबे भी। अच्छा गोटे कथा जिते भी गोटे झील बहु हो जिते घर को आसी थाए बापा माँ स्वामी अर्थात शाशु शशुर कथा मुझे समस्त गोटे आशा गोटे रही थाए जे बहु टिके रांधिकी दब बहु टिके आमर केयर नब ये नाच करने जिते से समय दौरान युवा सब किसी मैनेज कर पार्छन्ति ना। इनफैक्ट कौन है आमर घरे कि झील ना आम दी भाई तो ये जब आसिले जो तू आंकर जो नेटिव मोर माँ भी नेटिव से पाखे तो आंकर तालमाल एते मिसला ये तांकर गोटे झील पेरी बो ना झील ये एते सुंदर भाव में मैनेज करे घर सकाल उठिकी निजर हेल्थ केयर करे फर्स्ट तापर आम छोटा छुआ अच्छी से तार स्कूल जीव तापर ये मोर केतरा ऑफिस काम भी मोर सिस्टम डिवाइन मैनेज काम करियो प्लस इवनिंग रे तार निजर डांस पाइन से समय करे जब भी जो जगह रे ताकू दरकार से हिसाब रे सब दिन मैनेज करी चले इवेन दो ससुरंग हो सासू हो पिला हो कौन से दिन है नहीं सब ता टाइम रे शेड्यूल रे सब दिन चले। ओके तो निहाती आम कहि परिबा वन इन ऑल अर्थात तो सबु क्षेत्र में आप निजक मैनेज कर पार्टी जहाँफल कि आपणकर स्वामी निजे प्रशंसा करुँच निहाती रूपे शाशु शशुर प्रशंसा करुवे ये जो मैनेज करुँचापाई टे घर तालीम नहीं आसी ना एठिकार जो परिवेश देखिकी सिचुएशन देखिकी आप निजक एडजस्ट कले। This is very difficult question to answer, sir. Actually, every mother of a family, I hope they are very powerful, because we ladies we can manage everything. Like only the food or household things are not only a small things. They are very difficult to manage every day. So since I am very passionate toward my dance, where my passion turned into professional. So my profession, I need to support my own, like from health basis to time management, or the family full depends upon me. So I felt like my son should proud of me. Even he should be proud of me. Even my in-laws, okay, we can't even find any mistake in her. So she is trying at her best in every way. Okay. So I am trying my best. I may not reach like 100%. Like I am trying my best to be healthy in every aspect. So that is how I usually manage at my home too. Like at my native place too. I used to wake up at 5:30, should go to सकाळ 5:30 ରୁ उठुचंती। ओके जो हेल्थ केयर कथा कहले निजर हेल्थ केयर नउचंती तार टिप्स टिके देबे कि जो माने देखुचंती कार्यक्रम से माने मध्ये जानिबे से माने मध्ये इंस्पायर हेबे जे ना एमिति मैनेज करा जाई पारे एमिति हेल्थ केयर निया जाई पारे ठीक कोन फाइव आपण उठिले सकाळ उठिले तापर कोन करंते। So actually my day schedule is like I woke up at 5:30. I will get freshen up and I will go for yoga for 1 hour, and later on my kid goes to school. So that 1 hour of circus is completely dedicated to my kid. So 1.5 hours. After that I used to go for gym for 1 hour. In between I do all the tiffin section, all the household things for my husband.
and he have that breakfast and he can. योगाटा घरे करूथिबे जिम तो बाहर को जाउथिबे से भीतर जिम को धरी के नियंते ना आपण निजे मैनेज करंते एकला जीवा पई ना हस्बैंड धरी जा No, no, I manage my own. ओके Because why do I go for gym? Because every day, now, like nowadays, ladies of our age group, like around 32, 45, 50, these ladies are is lacking of complete bone power, and there is a lot of bone density. So I request every lady of our Odia people need to train up our own body strength. So one healthy woman reflects a very healthy family. So I strongly believe in that. Why should I go to gym? We can do our own household things. No, actually, why do we should go? There is a complete healthy atmosphere. We dress up like a queen every day. And nice. Okay. We strengthen. Like today, if I lift for 2 kgs, at least 1 month later I can lift up to 5 kgs. That it's a development of my body and self confidence. How can I speak? There are different kinds of people may come for gym activity. Some of them are very less active than me, or some of them are more active than me. Where I could happy I am okay from that stage to today's stage. I may get inspired to more active people. I have to achieve like them. So that is something should be very inspirational. So one should encourage ladies to go for gym. I strictly request everyone. So after my gym I come home. माने रिक्वेस्ट आपण काहा कहले जो माने विवाह करछि तांगर हस्बैंड मानु कहले ना काहा को रिक्वेस्ट करले आपण रे No. I already. से माने एलाउ करले ना से स्त्री माने जीवे Yes, I sincerely request all Kalinga ladies who are watching this, please do go for gym and get a fit body. And विदाउट परमिशन ऑफ हस्बैंड no, without no, it's all about his support itself. Because one should support. A happy family is always based on a woman. Exactly. So how can we women how women should be can be happy? Only because of a husband, right? Who supports, who heals here. Husband is like a power generator. So I request all men to support women at every aspect. So we will be very powerful. Further. बहुत बढ़िया कथा कहउचंती अति सुंदर भाबे कहउचंती गोटे आह्वान मध्य देइचंती महिला समाज को जे आसंतु आमे मध्य जति की शक्तिशाली हेचे आउरी मध्य शक्तिशाली हेबा तो आपण केते प्राउड फील करंती गोटे अलगा यूनिक विजन रखी कि से वर्तमान आगे जाउचंती आंकर विजन कि तांकर बेसिकली जो कुचिपुड़ी जो डांसिंग अच्छी से कला को तांके बंचे की रखी की आउ लेडीज माननको को वुमेन एंड डेवलप करिया पे सेटा तांकर बहुत इच्छा तो से एतिकी भितर काम करिया भितर भी तांके ओडिशा रे थाई की भी आंध्रा रे तांकर इंस्टीट्यूट रखी की प्लस ओडिशा रे तांकर निजर गोटे स्टूडियो आउ ये गोटे इंस्टीट्यूट भी मैनेज भी करूछन एति भितर सेति की लेडीज मानकर पावर माने बोधे तांका मनर गोटे आसी यस आई कैन डू एवरीथिंग ई गोटे मनोभाव नै बोधे से आगे जाउचंदी हां मैडम आपण जमती सार कहते जे आंध्र रे भी आपण गोटे इंस्टीट्यूट रखिचंती एठी मध्ये आपण रखिचंती पिल्ला मान गोटे ट्रेन अप करचंती केते पिल्ला सो बाहर लेनी Actually, my first institute at my hometown Tanuku. It's a parent institute, sir. Later on, after marriage, I started over here. There are around 600 students. Till now I trained in Andhra Pradesh. Here itself, I started my own studio first, without any schooling like anything. Later on, I started teaching a small amount of kids, like around 25. That's it. So I could experience my own experience with the students, and I could train kuchipudi, folk, and hula hoop.
अच्छा ये हुला हुटा कौन एग्जैक्टली टिके बुझे दियो टिके Yeah, hula hoop is a sport activity item, sir. It's completely a concentration based thing where I developed my own skill in such a way that I could dance classical with the hoop and folk with the hoop and semi-classical with the hoop. So I could do the dance where others can normally dance with the same could normally do the dance where I can do along with the hoop. So earlier I used to participate in many of the TV shows like in Telugu others, Sony TV and Tamil Vijaya TV and everywhere. Not only at one point, pan India I used to travel everywhere and performed in every one of the TV रियलिटी shows. शो को था आपन Yeah, like Sony, ETV, Ma TV, and mostly all the TV shows. So since I started doing different kinds of things along with the hoop, one of my bestest performance is like with the pots. It's completely fire on my hands, on my head, and I along with the hoop dance and doing on a pot under my legs. So it's a complete with different kinds of variations. Likely, I used to do mostly my songs are like patriotic songs on India based. In that way, I performed in front of Modi ji, अच्छा yeah, in Singapore. ओके So I globally performed over 3,000 above shows, performed in 16 countries, where my bestest show, prestigious show is like performed my dance in front of Obama and Modi ji in 2015, just before 26th Republic Day parade. So we performed in front of the most prestigious moment of India. So since where I received a humanitarian award from USA and Garuda from Tirumala Tirupati Devasthanam and Ugadi Puruskar and from Andhra Pradesh CM, and I was appointed as Youth Cultural Ambassador for Andhra Pradesh during 2007 to 2014 to 2019. So this is all due to patience, practice, experience, and future what we are going to do on future idea. That's it. ओके बहुत गुड़े आपण एक्सपीरियंस गेन कर सारी आगू आउ कौन चिंता करते तो आप पाई सारी बहुत गुड़े पाई सारी आगू आउ किसी सेमती स्वप्न रही ड्रीम किसी रही कि जोटा कि आप करने चाहते चिंता है सर, अभी भी चिंता है, मतलब लाइक इबे ओडिया बुझी मुते कहीं तो मुते कोई पर नहीं। अच्छा अच्छा यही चिंता है सर। से चिंता बहुत बढ़िया बहुत खुशी लगिला जे गोटे ओडिया ओडिशा रे रही कि ओडिया परंपरा ओडिया संस्कृति ओडिया कला को आपणे कि ओडिया कहवा पई जो अहर उद्यम गोटे चली बुझिया पई अहर उद्यम गोटे चली से बहुत आम साधुवाद जनाऊँ निहाती रूप में आशा करूँ जे आगू मध्य से स्वप्न साकार हम तथापि नाच को लेकिन आउ किछि ड्रीम रही कि नाच की I would like to train more students at a perfection, disciplined and concentrated kids for further generations. So why do dance? What do dance teach to students? Many of our schools may not teach how to talk, how to be respectable towards elders, or they don't even know what are our roots from our traditions and cultures. Only dance will let them know what about Ramayanam, Mahabharatam, and what kind of culture we have, what kind of why should we keep bindi over here, what kind of sari we wear, and how does it respectful towards our culture and tradition. How could we speak to one another
without hurting others. And if any other elders, while we are talking or with the manners, body language, everything dance could teach them. No, we have to follow the generations, because these are not at all written or imitated from others or from any other books. These are directly we obtained from Lord Nataraja. So these are blessings. Who could dance, who could watch dance, who could like not only dance, any culture, like any traditional culture of our own roots. So since after marriage, I felt like Odia and Odissi is very nearer to my heart. So I'm waiting for the perfect kind of traditional type of Odia and Odissi. So like I'm trying my best towards Odia to speak out. बहुत बढ़िया लगला निहात रूपे में कहीपर अंबिका केवल अनेक मेंचा मेंचा मधुर अनुभूति साउंटुंट ताहनु बरंग अनेक रेकर्ड सृष्टि करि जहाँकि आम यही ओडिशा पाई आम माटी पाई गर्व गौरव आनी आम ताही महाप्रभु जगन्नाथ पाखे कामना करूँ से आहरी एमती अनेक मधुर अनुभूति साउंटुंतु अनेक गर्व गौरव आनी दिंतु आमर ही माटी पाई आज प्रसंग को रखी आप साथी प्रकाश विदाय दिंतु पुणी थे आउ एक प्रसंग आप सहित जोड़ी हूँ नमस्कार।